Hi, welcome to Now Showing. I'm Atika Farooqui. Your attitude is like the box of crayons that color your world. I hope that you're keeping your life colorful and watching good cinema. Today we bring to you the people who are keeping the colors of cinema alive and singing away to glory. Let's begin, as always, with the highlights. Afwaah is a taut thriller that engages and captures your attention. A brilliantly directed drama. This one is not to be missed. Bhumi Pednekar, Nawazuddin Siddiqui and Sudhir Mishra talk to us about their new film and what prompted them to work on it. And singer Tulsi Kumar talks about her new indie song and her music process. Let's talk about Afwaah that releases this week, and then we'll talk to the people behind it. The plot of Afwaah involves politician Vicky Banna, played by Sumit Vyas. He gives a fiery speech and ends up polarizing the people of Sawalpur. A communal clash ensues and many people lose their lives. This shakes his fiancée, Nivi, played by Bhumi Pednekar, who decides to run away. While doing so, she crosses path with Rahab Ahmed, played by Nawazuddin Siddiqui. In a bid to save his political career, Vicky starts a rumor on social media which soon goes viral. And that's the start of the dirty dance of politics and rumor mongering on social media. Rahab and Nivi now have to run for their lives, and it becomes a pitiful dance of hatred. Director Sudhir Mishra translates every man's internal war on screen. It's a real-life story out there. A master storyteller and a craftsman, he just does not stop till he holds you by your arms and forcefully creates a lump in your throat to make you realize how we are a part of a society that lives with afwaahs and fake news and often turns a blind eye to a calculated campaign that intends to malign people's reputation, even causing their deaths. Backed by producer Anubhav Sinha, Sudhir is also behind the dialogues and the screenplay. Not one moment in the film seems irrelevant or wasted. All the ends are tied to the central theme. WhatsApp forwards with graphics and texts that force you to lose your temper, women being an object owned by their men, hate campaigns in a politically charged atmosphere targeted at winning elections, and many other alarming situations that you see around you. Sudhir Mishra, also known for extracting amazing performances from his actors in the past, such as in Hazaro Khwahishein Aisi, Khoya Khoya Chand, Chameli, etc., gets the best out of Bhumi Pednekar, Nawazuddin Siddiqui and Sumit Vyas, also Sharib Hashmi. She plays Nivi, the daughter of a renowned politician who will go with the flow to win elections. Bhumi plays an empowered 23-year-old girl who has to stick to her path amidst power-hungry men who would kill to win an election. Also save the man she supposedly run away with, as says the Afwaah or fake news. Nawazuddin Siddiqui is perfect to the T as Rahab Ahmed, an intellectual man, a writer who came back to India from the US to serve his country and is being hounded by the men of his own city to be killed. He is composed, very sophisticated and very effective with the dialogues given to him. He says, अगर मैं मर गया तो मेरी मौत एकदम फिजूल होगी. लोग कहेंगे मरा तो कसाई भी था. Being hounded because of his surname, he says, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैंने आखिरी बार नमाज कब पढ़ी थी. A truth for many people. In a world of crazy generalization, this film jolts you out of your irreverence and makes you see the mirror. After all, our children will inherit this world too. A truck driver says, I don't need to worry about money. I have sold my kidney. Once this grows back, I will sell another too. When Sharib Hashmi asks him, who told you that? He says, the doctor. The level of misinformation and illiteracy is alarming but real. And झूठ को इतनी बार बोलो कि वो सच लगने लगे. Sudhir Mishra and his writers Nisarg Mehta and Shiva Bajpai show their deep understanding of the contemporary world that they live in. They bring nuance to the storytelling and keep the characters real and composed. Sumit Vyas plays the character of Vicky perfectly well, balancing each of his maneuvers. Sharib Hashmi plays Vyas, a trusted helper Chandan, very well. And this trusted AD who blindly follows orders are far too many. The entire film set almost in a few hours or days in a small town of Rajasthan is so impactful that you may next time think, or rather not forward that WhatsApp message you are not sure of. It's a very well made film and you will be thrilled to watch something
so smart and well narrated as this. Moving on, many years ago I had lived in Meerut cantonment, which is very close to Kurukshetra, the land where the battle of Kurukshetra in Mahabharata was fought. The elders in my family used to tell us a story. Dronacharya was a guru to both the Kauravas and Pandavas, and Dronacharya could not be defeated until he himself would surrender his weapons. His son was Mahabali Ashwathama, who was unbeatable in war. Then a trick was played. An elephant by the name of Ashwathama was killed, and a rumor, an afwaah, was spread that Ashwathama mara gaya. When his father Drona got to know of this, he heard only half of the truth. The deceptive plot of Ashwathama's supposed death led to murder of his grieving father Drona, who was decapitated while meditating for his son's soul. This was the first afwaah or fake news of ancient Indian history. Now producer Anubhav Sinha, director Sudhir Mishra and actors Nawazuddin Siddiqui, Bhumi Pednekar and cinematically elaborating just this. They talked to me about the film. What was your trigger to make this film? जहाँ देखो तो वहाँ अफवाहों से घिरे हुए हैं आप, तो समझ में नहीं आता अपने बारे में, कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता कि आप जहाँ के थे उस जगह के बारे में ऐसी चीज़ें कही जानी है कि आपको अपना खुद का तजुर्बा जो उस जगह के बारे में वही कुछ क्वेश्चन करने लगते हैं। इतनी सारी कहानियाँ घूम रही हैं, तो दैट वाज आई थॉट कि एक इंटरेस्टिंग वो बेसिस है एक फिल्म का, एक शुरुआत का, कि कुछ नहीं हुआ पर बहुत कुछ हुआ और कुछ नहीं हुआ को इतना बात को पतंगड़ बना दिया गया कि इतना कुछ हो गया और फिर वो एक थ्रिलर में तब्दील हो जाता है। एक तरह की एक रात गुजरती है जिसमें दो लोग फंसे हुए हैं एक अफवाह की वजह से और क्या होता है, एंड इट्स नॉट नेसेसरी सेंसेशनलिस्ट। तो हर चीज़ पे तो मैं ऐसी तो फिल्में बनाता नहीं कि कोई सेंसेशनलिस्ट फिल्म है, तो वैसी उसी कड़ी में है एक फिल्म जो अपने वक्त को देखती है, उसकी एब्सर्डिटी को। जी नवाज, आपकी फिल्म थी मंटो। एक तो कुछ एक ऐसा हो गया है कि रियलिटी की जो लाइक आई वर्ड यूज्ड अ वर्ड कॉल्ड मकाब्र, द रियलिटी हैज़ आल्सो बिकम मकाब्र। मंटो एक बड़ी अच्छी फिल्म थी जिसमें एक इसी तरह का स्टेटमेंट मंटो कहते हैं कि अगर आपको मेरी लेखनी पसंद नहीं है इसका मतलब कि ये पूरा समाज ही सांस लेने लायक नहीं है, इस काबिल नहीं है कि आप इसके बारे में बात कर सकें। एंड समहाउ आपको बहुत आसान हो जाता है ऐसी फिल्मों से एसोसिएट करना आजकल विद दिस ह्यूज बॉडी ऑफ वर्क दैट यू हैव हैड, कि ये जो बात लेकर आ रहा होगा इसमें कुछ तथ्य होगा। आई थिंक वो सीरियस बात से या थिंकिंग से हम इतने नाराज़ होने लगे आजकल कि जैसे हमें ऐसा लगने लगा यार मेरे पास टाइम नहीं है बहुत ज़्यादा सोचने का, और यह जैसे इंटेलेक्चुअल एक गाली बन गई आज की डेट में, है ना, उस तरह की चीज़ें हो गई। मतलब अगर कोई सीरियस बातें सुनते हैं ना, अगर वो इंटेलेक्चुअल फिल्म है तो देखते हैं ना, क्यों घबराने लगे हम लोग, है ना, हम लोग सतही क्यों होते जा रहे हैं, हम खुद को ऐसा कर रहे हैं कि हम खुद सतही होना चाह रहे हैं, सुपरफिशियल लेवल पे सारी चीज़ें करना चाह रहे हैं। हम फिल्में भी उसी तरह की पसंद कर रहे हैं, हम खुद वैसे होते जा रहे हैं, हम कोई डीप थॉट रख ही नहीं रहे हैं। तो ये मे बी आई डोंट नो ये क्या, ये भी एक अफवाह सी लगती है मुझे, क्यों हो रहा है ये सब। कहानी से ज़्यादा मुझे मज़ा आता है किसी कैरेक्टर की, किसी इंसान की सोल को एक्सप्लोर करना। राइट। इतने हज़ार तरीके हैं, अगर मैं पूरी उम्र और मुझे अगर 50 साल और मिल जाए तो भी ख़त्म नहीं होंगी वो चीज़ें। बिल्कुल। भूमि, what has been your experience in the last 10 years about with just Afwaah as a tool to get to a person who's in public space? I mean, definitely spreading of a rumor most times does not work in the best interest of a person. Sometimes it does. You know, I've actually seen it happen where, like, you know, an actor has spread a rumor that, oh, I'm doing a film with this XYZ person, and a few months later I'm like, oh, they are doing a film, and there was nothing of that happens too, but so that's planted okay. A seed. That's okay. You know, whatever you do, what you do to reach wherever you want to in life. But when a third person spreads a rumor and affair about me, and it has a negative effect on me, on my family, my being, my mental state of mind, then there is a problem. You know, you can just leave a statement loosely.
you know, but you don't know the effect of that statement on me. You don't know how sensitive my family ties are. You don't know what kind of an environment I'm born in, and you don't know what things affect me. Right. So I feel that's where it goes out of hand. I think in the last few years we've seen many incidences that have happened where people have assumed so much about individuals, about things that have happened because of incorrect, most times incorrect, and sometimes half information, that we've literally seen lives being destroyed for the moment. Yes. I see it happen loosely in my ecosystem where like a WhatsApp message is shared and spoken about and there's no fact check done about it. You know, it can be cheap gossip to it can be something that can have an impact on a larger level as well, where it can cause a lot of disharmony. You know, so the problem is obviously the person who is spreading it and whatever their ulterior motive is, but we are also the problem because we are equally at fault because we are not doing anything to stop this. So, Sudhir sir, well, in the last 3 to 4 years, we've had several discussions within the industry with all my industry friends. So, in one of the mehfils we had this discussion about how time is fleeting and how times change. So, अकबर ने एक बार बीरबल से कहा था कि कुछ ऐसा बताओ मुझे कि मैं जब खुश हूँ तो सुन के दुखी हो जाऊँ और जब दुखी हूँ तो सुन के खुश हो जाऊँ. तो अकबर ने बीरबल ने पर्शियन में कहा था, दिस टू शैल पास, ये भी गुजर जाएगा. Just in the last 6 months, I see a little bit of a change. There is a sudden hope. There is a sudden positivity about the film industry. We know that the stardom culture is back. We know that the halls are being packed again. We know that people are ready to shell out money as long as that interests them. And there was this whole discourse about how OTT will ruin Bollywood. Before that, how television, aa gaya, ab to cinema khatam. And now we see cinema rise back onto its feet. You've spent 40 years, a little less or a little more. Tell us कि बीरबल ने जो कहा था, this too shall pass. क्या ये मंत्रा लेके लोगों को जीना चाहिए और खुश रहना चाहिए? This will pass only if we do something about it. वैसे it won't pass. If we sit on our backsides and so I mean it's our responsibility. I mean it's a common responsibility between the audience. Yes. Somewhere I think we have lost contact. And I think we need to have conversations, and I think the audience also needs to get up and be more proactive. Okay. And a new set of people will come, new technology has already come. All sorts of the delivery systems will change. People will be, seeing a lot of all sorts of things. So yeah, I see a very good time for. ऐसा तो होगा नहीं ना कि लोग मतलब में टैलेंट ख़त्म हो जाएगा या उनको नहीं आता कुछ या अभी हर जनरेशन कहता है कि यार अब दूसरा जनरेशन ऐसा है वगैरह वगैरह वगैरह. अब वो थोड़ा बहुत आजकल के जनरेशन के बारे में सही भी है कि कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा आलसी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा इंटाइटल्ड हो गए हैं और शायद वो गलती उनकी नहीं है, उनके माँ बाप की है और प्रीवियस जनरेशन की है कि आपने विरासत में उनको क्या हैंड किया है. बट हाँ इट पास, हर चीज़ गुजर जाएगी और अगर उसको ख़त्म होना ज़रूरी है तो ख़त्म भी हो जाएगी. मनोज कुमार कहते थे भारत कि सबकी फिल्में चलनी चाहिए, मेरी थोड़ी ज़्यादा चलनी चाहिए. वो अच्छा ख्याल था. अच्छा ख्याल था. हाँ. और वो सबका अगर सच बोले तो सबका यही ख्याल होता है. सही बात कि भाई सबकी फिल्में चलनी चाहिए, मेरी थोड़ी ज़्यादा चलनी चाहिए. हाँ. है ना. ये जो सच है ये इंडस्ट्री को थोड़ा सा फिर से, एक ज़माना था जब इंडस्ट्री में सारे लोग एक साथ बैठते थे. गुरुदत्त की फिल्म का प्रेम ऐसा सुनते हैं तो राज कपूर भी आते थे, फला भी आते थे, फला भी आते थे, फला भी आते थे, डिस्कस भी करते थे क्या हुआ. अब वो कम हो गया. अब कितने डायरेक्टर होंगे और वो होंगे और प्रोड्यूसर होंगे जो अपने लिरिसिस्ट के साथ बैठते हैं, राइटर्स के साथ. कौन बी.आर. चोपड़ा और साहिर में कोई फर्क थोड़ी ना था. करेक्ट है ना. अब आप बताइए जो वो प्रोड्यूसर आज का है और जो आज का लिरिसिस्ट है उसको तो वो फिर से मुंशी समझने लगा. तो वो जो थोड़ा सा एक क्लास सिस्टम जो है ना, सॉरी ये जू बैंड्रा का ये फिर से आ गया. ये फिर से जाना पड़ेगा. और एक जो नई एनर्जी है बाहर से, जो एक नई इंडस्ट्री में जो नए लोग आ रहे हैं उनको जगह मिलनी पड़ेगी.
ये जो चेंज आया भी था अच्छा, जो 6-7 साल पहले ऐसा लगा। तो आप देखिए डायरेक्टर्स का नाम लेते हैं, हाँ। इम्तियाज अली, अनुराग कश्यप, विशाल भारद्वाज, अमित मसूरकर, मैं ऐसे Right. अनुभव सिन्हा, The new age मैं filmmakers. दैतिक मानशु धुलिया, मैं नाम लेता रहूंगा, अंसल मेहता, Yeah. राजकुमार हिरानी, Yeah. जितना नाम ले, बहुत सारे जो लोग आए, अभिषेक चौबे, जितने लोग भी आए, नवदीप सिंह, वो सब कहीं कुछ अलग अलग बैकग्राउंड से आए। Yeah. वो कुछ उनके पास अपनी कहानियां थी, है ना। तो उन लोगों को, कहानी इंडस्ट्री को उन लोगों को मौका देना पड़ेगा जिनके पास अच्छी कहानियां हैं, जिनके पास कुछ तजुर्बे हैं, जो इस मुल्क से कनेक्टेड हैं, तब कुछ तब्दीली अच्छी आएगी। मेरे ख्याल से वो हो रहा है। जो एक झगड़ा था आर्ट फिल्म का और पॉपुलर सिनेमा का, जो ये था, वो थोड़ा कम है आजकल, है ना। I think we need to, the associations need to wake up a lot more. एक छोटा डायरेक्टर अगर सेंसर ट्रबल में हो बच्चा कोई, तो 50 बड़े डायरेक्टर्स को खड़ा होना चाहिए उनके, उसके साथ क्यों नहीं खड़े होते? बिल्कुल। तो आपको एक दूसरे के लिए इंडस्ट्री की तो जो मैटर्स हैं, उसमें जिस तरह से पहले 50 के दशक में, 60 के दशक में, 70-80, ये जो एक यूनिटी थी इंडस्ट्री की, वो वापस लानी पड़ेगी। अनुभव बहुत अहम पार्ट है वैसे इसका, क्योंकि अगर अनुभव सिन्हा जैसा प्रोड्यूसर ना हो तो इस तरह की फिल्म मैं नहीं बना सकता था। ये कहानी किसकी है? मेरी। ये आपने लिखी है? कहानी मैंने और मेरे 1-2 राइटर्स हैं, शिवा और निसार, मिलके हमने स्क्रीन प्ले लिखा। एक रात में लिख दी? नहीं। Is it a passion project? Is it a passion project? कभी कुछ डायरेक्टर्स का एक होता है ना, एक कहाँ एक सीड, जैसे उनकी फिल्म मुल्क। आप एक रात में अक्सर एक कहानी लिखते हैं, कुछ मेन ख्याल आता है, फिर आप अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके हैं, तो कोई एक तरीका नहीं है। अनुराग कश्यप 4 दिन में लिख देता है, तो मतलब ऐसा नहीं है। मैं एक कहानी लिखता हूँ, वो एक रात में ही होती है मोरलेस, फिर उसको छोड़ देता हूँ। फिर अगर वो वापस पुकारती है आपको, राइट, इसका मतलब ये बेकरार है कि आप सुनाओ मुझे, तो फिर उसमें 2-4 महीने लगते हैं, क्योंकि ख्याल जो है वो आसान होता है बोल देना, फिर आप लिखने बैठते हो तो बोले यार ये तो वो नहीं हो रहा, और कभी कभी आपको छोड़ना पड़ता है फिर उसको। कुछ दिनों के लिए छोड़ दो। नहीं, डजंट वर्क। वो ख्याल अच्छा था, लेकिन वो फिल्म में नहीं तब्दील हो रहा ठीक से। कभी कभी ऐसा भी होता है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर अफवाह। Time for a short break on the show. When we come back, we have singer Tulsi Kumar unplugged. She's a popular singer, also the daughter of the Skyn of T series, that is Gulshan Kumar. Don't go away, we'll be right back. Welcome back to Now Showing. I'm Atika Farooqui. Singer Tulsi Kumar, who has turned a lyricist for her new indie song, says she loves to experiment with her voice. My colleague Vishal Chatkara caught up with Tulsi earlier this week and got her talking about her music, the songs that shaped her career, and how her father, Gulshan Kumar, had a knack of identifying film titles. Listen in. सोचते थे हम ये ऐसा होगा क्या कभी, तुमसे मिलके दिल ये मेरे सुनता ही नहीं, प्यार क्या ये होता है हम न जान पाते, गर मेरी जिंदगी में यार तुम ना आते, दिल हमारा था आवारा अब तुम्हारा हो गया. Oh, nice. Thank you. That was, of course, your new song titled Awara, which is also written by you. Yes. And the song is composed by Kaushik Guddu. Right. So, what was the idea behind this song? And would you please like to talk to us about the journey of this song Awara? Actually, I had the thought ready in my mind. एक series कर रही हूँ मैं, which is called the Truly Connected series, and this is Awara is the second song of the series.
तो मेरे माइंड में पूरा थॉट था कि क्या एग्जैक्टली लिखना है, बट आई हैव नेवर रिटन अ सॉन्ग बिफोर. दिस इज ऑफिशियली माय फर्स्ट डेब्यू एज अ lyrics writer, but yeah, I've tried, and my idea of the Truly Connected series is very easy lyrics, easy hearing, very like mellowed down structure of music production. So I decided to put my thought only into words, and that's how Avara happened and made me debut as a lyrics writer. Tulsi, which was that one song that you think was the one that put you on the map? Would you say the song from Once Upon a Time in Mumbai? Yeah, absolutely, absolutely. Back in 2010, composed by Pritam Da. Tum Jo Aaye is, I can say very proudly, the turning point of my career, where you know I actually arrived into the music industry with that song. Were you nervous while singing the song? Actually, with Pritam Da, na, he never tells you कि आप किसके साथ गाने वाले हैं, कौन सी फिल्म में गाना जाने वाला है. I was not really, I didn't have, I just went to sing the scratch. I cannot name, but ऐसे काफ़ी गाने हैं जो मेरी वॉइस नहीं गई है और किसी और सिंगर की आवाज़ गई है. That's a revelation, because we only heard like music labels dictating which voice will. No, I think it's totally the music director's call and the character जिसके ऊपर song होने वाला है उस सब पे. Not the music label owner? No, I don't think so. All right. वरना आज सारे गाने तुलसी कुमार के होते हैं. But that's not the case. I think every song chooses its singer. तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई. सपने तेरे चाहतों के, सपने तेरी चाहतों के देखती हूँ. अब कई दिन है सोना और चांदी रात बन गई. हो तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई. Your father, Gulshan Kumar, had this knack of identifying film titles. I know this story when he heard somebody saying Lal Dupatta Malmal Ka, and he noted down in his diary and registered it and made a film on it. Right. Is there a story or an anecdote would you like to share from one of your dad's music sittings? A lot of things that Papa kind of did. Honestly, मैं तो बहुत ज़्यादा छोटी थी. I was just 4 or 5. I've seen him bring back the music of Ashiki, Dil Hai Ke Manta Nahi, all that I have. Also Lal Dupatta Malmal Ka, I know that, you know, he was so fascinated with music and musicians. So Lal Dupatta Malmal Ka, he made the entire album and then the movie was made. Ashiki के कुछ गाने थे जो पहले के बने हुए थे. Music Bank के, you know, Papa used to keep making songs and putting in the music bank. So I think Saasoo Ki Zarurat, one of the songs, was already made. So in the end, please give us few lines of any of your favorite songs, either from Dil Hai Ki Manta Nahi or from Lal Dupatta Malmal Ka. I'll hum a few lines of Dil Hai Ki Manta Nahi. हम तो मोहब्बत करते हैं तुमसे, हमको है बस इतनी खबर. तन्हा हमारा मुश्किल था जीना, तुम जो ना मिलते अगर. ये बात सच है सब जानते हैं, तुमको भी है ये यकीन. हो दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं. Listen, the Backstreet Boys have come to India. You know about that? Who loved Boyzone, Def Leppard, Cyndi Lauper, Roxette, Ace of Base, Billy Joel,
UB40 and Backstreet Boys in the 90s. Give me a cheer. Tell me why ain't nothing but a heartache, 'cause I want it that way. Listen, what's life without cinema, and what's life without music and dance and cheers and happiness and peace? Spread joy. I'm Atika Farooqui. We meet each other again in the next episode. Till then, goodbye.